This is again important part, and new drugs from this category, they are very important. A lot of times they used to ask question on this. So resin, volatile oil, tannins, these parts of pharmacognosy are also important, as like your alkaloids, glycosides. But major questions they are going to come from general pharmacognosy, alkaloids, and glycosides. So, but other tannins, terpenoids, they are also a little bit important. So, as far as the classes are concerned, as far as the different identification tests are concerned, as far as the name of drugs and name and chemical constants, sometimes your adulterants. That's it. So, next part is nothing but the resin and related drugs. So, we have completed your general pharmacology. We have seen alkaloids, we have seen the glycosides, we have seen the tannins, we have also seen the terpenoids. The terpenoids we have seen, tannins we have seen the alkaloids, glycosides, general pharmacology. We have also seen the biogenetic pathways. Next part is nothing but the resins and related drugs. Resins and combination. Most of the resins they are either in a combination with the gum, different types of gums, or and also sometimes they are in a combination of oils, volatile oils. So resins again they are the mixture of again they are the secondary metabolites of plant. They are the secondary metabolites of plant. They are nothing but the mixture of volatile oil or essential oil, and their oxygenated product after terpene. Volatile oil, oxygenated product of terpene, and carboxylic acid. They are found as a exudation. Exudation means release extraction from the trunk of various trees. So if you see the रबर का ट्री आपने देख लिया तो उसको अपन कुछ कट करेंगे तो क्या होगा उससे एक जूस बाहर आ गया दैट इज नॉट द exudate or exudation from the trunk of various trees. So resins are the mixture of essential oil, their oxygenated product of some terpenes and carboxylic acid. They are found in the exudation as a exudation from the trunks of various trees. So they are formed in the schizogenous glands. Schizogenous glands of plant or schizolysogenous glands of plant. तो जो प्लांट की ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड schizogenous and schizolysogenous, they are the end product of your metabolism. They are the end product of metabolism of plants. Again chemically they are the organic acids. Either they are organic acids, they might be alcohol, might be ester, or they okay? So they are nothing but the organic acids, alcohol, esters chemically. तो resins क्या होते हैं कि resins they are the they are the essential oil, they are the mixture of essential mixture oil का mixture होगा essential या essential oil means volatile oil, okay? And oxygenated product of terpene and also carboxylic acid. इसमें सब carboxylic acid हो सकता है ना, जैसे इसमें volatile oil हो सकता है, उसमें गम हो सकता है, उसमें terpenes की product हो सकते हैं. So they are found in the schizolysogenous gland or schizogenous gland of plants, and they are the end product of your metabolism. Chemically, they are the organic acids, or they may be alcohol, they may be ester, okay? Or it may be natural resin. Now there are different types of resin. Now you have to remember this acid resin. Acid resin means what? You will have acid in this. Okay, acid resin, then ester resin, and then resin alcohol. So first acid resin, for example, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So in the acid resin you have example of cellophane. Now main component of or main chemical constituent of cellophane is nothing but the abiotic acid. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था. Abiotic acid is the active constituent of following. तो उसका आंसर था cellophane. Recently I think GPAT 2017 or 18 में है. Cellophane, okay. So cellophane is not a plant; it is a product. It is a byproduct. If you try to isolate the turpentine oil, so after the distillation of the resin, so you are going to get turpentine oil plus byproduct, and that byproduct is known as a cellophane. Now it is also found in the centrate or centraloic acid is a component of centrate. Then in case of मिर एक प्लांट का नाम है, इसमें क्या होता है कोमिबोइक एसिड.
Comifolic acid is also resin from milk. Now, in case of shellac, you are going to have aleurotic acid. Shellac में होता है aleurotic acid. So these are the example of acid resin. Now, next is nothing but the ester resin. Ester resin किसमें है? Mostly is found in the benzoin, okay, and storax as well as इसमें क्या है? कौन सा है? Cinnamyl cinnamate. Cinnamyl cinnamate is the ester resin. Cinnamyl cinnamate क्या है? Ester resin होता है. So resins, they are classified into different types. Okay, resins, they are either acid resin or they are, okay, acid resin हो सकता है उसमें, या फिर क्लासेस इंपॉर्टेंट है. एसिड रेजिन, ईस्टर रेजिन, ओके, देन रेजिन अल्कोहल. एसिड रेजिन में सब एसिड आएगा, जैसे एबियाटिक एसिड फ्रॉम सेलोफोनिक, सेंट्रलोइक एसिड फ्रॉम सेंट्रैक, ओके, देन कोमिफोरिक एसिड फ्रॉम मिर, ओके, देन aleurotic acid from shellac. So they are the acid resins. Okay? Then resin, acid resin, ester resin में, so example is a benzoin. Drug containing ester resin is a benzoin, storac, okay, etc. So cinnamyl cinnamate is a ester of cinnamic acid. Cinnamyl cinnamate क्या है? Ester of cinnamic acid. So it is found in the benzoin and storax. So ester resin. Third type is nothing but the resin alcohol. Resin alcohol मतलब इसमें अल्कोहल रहेगा. So high molecular weight alcohol, for example, it is present in the balsam of Peru. Balsam of Peru में होता है ये high molecular weight alcohol. Again types of resin है ना. Chemical classification ये है. Chemically they can be either acid resin, they might be either ester, they might be either resin alcohol. Types of resin कितने टाइप के होते हैं? There are different types of resin. So we'll see it. First one is oleo resin. देखो नाम में रखता है सब कुछ. Types of resin कितने टाइप के है देखो. ओलियो रेजिन होता है, देन ओलियो गम रेजिन होता है, ओके, ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ओके. ओलियो रेजिन मींस व्हाट? ओलियो इज द टर्म फॉर ऑयल. So volatile oil plus resin, so resin plus volatile oil, known as the oleo resin. It is found in the Canada balsam, then capsicum as well as ginger. Capsicum, ginger, Canada balsam इसमें क्या है? ओलियो रेजिन है. ओलियो रेजिन मतलब क्या? ऑयल प्लस रेजिन. ऑयल प्लस ओलियो इज द टर्म फॉर ऑयल, वोलेटाइल ऑयल. ये ऑयल कौन सा है? ये फिक्स्ड ऑयल नहीं है, इट इज अ वोलेटाइल ऑयल. कौन सा ऑयल है? इट इज अ वोलेटाइल ऑयल और इट इज अ एसेंशियल ऑयल. इन द ओलियो रेजिन, वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन, नोन एज ओलियो रेजिन. एग्जांपल कैनेडा बाल्सम, कैप्सिकम एंड जिंजर. नेक्स्ट होता है ओलियो गम रेजिन. नेक्स्ट इज नथिंग बट द ओलियो गम रेजिन. नाउ हियर आर थ्री टर्म्स. ओलियो मींस ऑयल, gum means a gum hydrocarbon, and resin is the resin. Okay? So oleo plus gum plus resin. So volatile oil plus gum and resin. It's the combination of three. Volatile oil plus gum. Now example of this is nothing but the milk and bull asafoetida. Asafoetida is known as a hing. मराठी में होता है हिंग, हिंदी में भी उसको बोलते हैं हिंग. Asafoetida is nothing but the hing. Oleo resin, volatile oil plus resin. Oleogum resin, volatile oil plus gum plus resin. Then glycoresin, what is the glyco? Glyco is the term for sugar, obviously. Resin, sugar plus resin. इसमें होगा volatile oil plus sugar. Example is found in the jalap and podophyllum. Next होता है balsam. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2023. What do you mean by balsam? If a resin consists of benzoic acid and cinnamic acid. अगर रेजिन में बेंजोइक एसिड है, सिनेमिक एसिड है, तो उसको बोलेंगे अपन बाल्सम. इफ रेजिन कंसिस्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड, देन इट इज नोन एज अ balsam. It is known as a balsam. Example is a balsam of Tolu, balsam of Peru, and Storax. So balsam. So you should be able to differentiate between this oleoresin, oleogum resin, and balsam and resins. Next one is the resins. Are you getting this or not? Simple है. Yes, yes or no? Okay. Now resins, they are the complex of natural substances without any specific chemical properties. They are inert chemically. ये कुछ इसका natural substances होते हैं complex and without any specific chemical properties. They are inert chemically. They are not hydrolyzed and not form a salt. ये salt भी नहीं करते किसी के साथ में hydrolyze नहीं होता. For example, cellophony and acid. So in that resins are also present. Oleogum resin
oil plus gum plus resin. Oil मतलब क्या है? volatile oil. Oleoresin means oil plus resin. Glycoresin means glyco is the term for sugar. So resin plus sugar. Volatile oil plus sugar plus resin. And balsam when resin consists of a cinnamic acid and benzoic acid. What is a balsam? तीन होता है इसमें. First drug from this category is the ginger. सबको मालूम है जिंजर. सर्दी हो गई आपको, आप क्या करते हो? अदरक वाली चाय पीते हो. जिंजर का मतलब क्या है? अदरक. So it is also known as a gingiver. Surname is the gingiver, or in the Marathi it is known as the sunthi. Biological source and geographical source. ये क्या है जिंजर? You know that क्या होता है? It is a underground modification of root. So what is it? It is known as the rhizomes. Dried rhizomes of gingiber officinale family क्या है? Gingiberaceae. Tell me the another drug which is belonging to family Gingiberaceae. Yes, anybody? कौन सा ड्रग है? और एक अभी रिसेंटली देखा, टर्मरिक है. और क्या है? टर्मरिक है. और अपना ये कार्डेमम. कार्डेमम इज आल्सो बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबेरेसी. ठीक है, तो ये कैसे कब याद होगा आपको? आप जब बार बार पढ़ोगे ना उसको तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक. हमेशा मतलब हमेशा सब साथ में पढ़ते थे. ऐसा कुछ सामने बोल रहा है ऐसा सेम, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसा ही हम जब ये ड्रग्स के नाम याद कैसे रखना है, तो दो चार जन बैठने का, जिसको मालूम है वो बोल देगा सामने से ना, दो ऐसा, तो ऐसा करके हमने ऑटोमेटिक याद हो जाता है. Officinalis, Gingiber officinalis family, Gingiberaceae. It is a rhizome. Okay, it is native to the Southeast Asia, cultivated in the Caribbean island, then Africa, Australia, Jamaica, Taiwan and India. इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है, खेती होता है. कल्टीवेशन एंड कलेक्शन. सो व्हाट काइंड ऑफ सीड, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट इज नीडेड. सो जिंजर नीड्स ह्यूमिड क्लाइमेट. इसको ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है. ओके, कल्टीवेटेड इन द एरियाज वेयर देयर इज अ हेवी रेनफॉल. जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है जिंजर. इफ देयर इज नो सफिशिएंट रेनफॉल देन यू हैव टू मेक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन. अगर वहाँ पे रेनफॉल प्रॉपर नहीं है तो अरेंजमेंट चाहिए. Now what type of soil is required? Sandy or clay or red loamy soil is required. Sandy or clay or red loamy soil, which is suitable for ginger. It is cultivated by sowing the rhizomes. यहाँ पे कोई seeds वगैरह नहीं होते. So rhizomes as such they are used. In the month of June, ginger is a soil exhausting crop. क्या है? Ginger is a soil exhausting. मतलब क्या? Ginger is a soil exhausting crop. मतलब it will take all the nutrients from soil. So after a crop of ginger, ginger के बाद में वो जमीन का जो वो जो है मिट्टी, उसका उसका क्वालिटी जो है कम हो जाए. So ginger is a soil exhausting crop and being it is a rhizome needs to be supplemented with a good quantity of manure. खाद उसको अच्छा देना चाहिए, फर्टिलाइजर्स उसको अच्छा देना चाहिए, बिकॉज उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा वो. ओके, जो जमीन में से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा उसको बोलते हैं सॉइल एग्जॉस्टिंग. आफ्टर 6 मंथ ऑफ सोइंग इट इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. 6 महीने का ही ये क्रॉप होता है. हार्वेस्टिंग इज डन बाय डगिंग द राइजोम्स. खोद के निकालना पड़ेगा ना राइजोम्स. एंड दे आर वॉश्ड प्रॉपर्ली एंड ड्राइड टू इम्प्रूव द कलर, प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर ग्रो. क्या होता है कि राइजोम्स में छोटे छोटे डॉटर्स क्राउन होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी उसके ऊपर भी ग्रो होना चालू होता है प्लांट. सो इफ यू हार्वेस्ट दैट ginger and if you are not drying, what will happen? Ginger will start growing into a plant. It will start converting into plant. So you have to dry that ginger after digging up, after collection properly. Ginger, okay, dried to improve the color and prevent the further growth. Rhizomes are scraped. जो ऊपर वाला स्किन होता है उसका स्क्रैप करना है. Rhizomes are scraped, dried, coated with the inert material like calcium phosphate. It can be coated with the calcium phosphate. Coated with the calcium. Now next is nothing but the microscopic characters of this. Okay, microscopic characters of irregularly arranged cork cell. Cortex is
made up of a thin walled parenchymatous tissue. Closed, okay, closed fibrovascular bundles, collateral fibrovascular bundles. They are present in the cortical tissue. Oily glands, starch grains are found in the throughout the ground tissue. Chemical constituents are important. So it has a volatile oil. कितना रहेगा volatile oil 1 to 4, starch around 2, starch around 40 to 60%, resin रहेगा आपका 5%, resin कितना है 5%, volatile oil 1 to 4%, starch 40 to 60%, resin 5%, and in that you have sesquiterpene hydrocarbon, sesquiterpene hydrocarbon, and which is responsible for the smell of your ginger, aroma of ginger. It's the essence of ginger. Sesquiterpene hydrocarbon that is responsible for the smell of ginger. Also, it has alpha gingiberine, beta bisabolin, and alpha farnesene. These are also a hydrocarbons. Now, flavor, pungency, and pharmacological effects because of the phenolic ketone. इसमें phenolic ketone जो होता है part, so it is responsible for the flavor, pungency, and pharmacological properties. Ketone part of oleoresin. इसमें क्या होता है oleoresin oil plus resin. Like for example क्या है ginger oil, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, okay, आ चुका है already. Other constituents are like a Chagall, hydroxycoumarine, also present in the oleoresin. Oleoresin, the main component of oleoresin found in the ginger, and it is a sesquiterpene, sesquiterpene hydrocarbon. याद रखना है, are you getting or not? Sesquiterpene मतलब क्या है? Yes, anybody, what do you mean by sesquiterpene? How many number of isoprene units are there in a sesquiterpene? कितना? How many number of isoprene units are there in a sesquiterpene? कितना रहेगा? Your options are 1, 2, 3, 4. 3, yeah, 3 isoprene units are present in the sesquiterpene. Remember. So isoprene is also known as a hemiterpene. You might know. वो हो चुका है. Isoprene unit is known as a hemiterpene. Okay. And now 2 isoprene unit will make a monoterpene. 3 isoprene unit will make a sesquiterpene. 4 isoprene unit will make a diterpene. 5 isoprene pentaterpene. 6 isoprene unit will make a already हो चुका है. Now remember this oleoresin ginger oil from the ginger. Now what is the use of this ginger? So it is used as a stomachic, again carminative, stimulant, flavoring agent. Simple है. Ginger oil is used in the mouthwash. Ginger powder is effective in the motion sickness. ये motion sickness क्या होता है मालूम है आपको? Yes, anybody? Do you know what do you mean by motion sickness? See, suppose that you are traveling in the bus, state transport bus. You know that आपका स्टेट का जो सड़क होता है, स्टेट का जो हाईवे होता है, अभी तो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, पहले लेकिन खराब थे. सपोज आप गांव में जा रहे हो बस में बैठ, आप क्या हो रहे हो, बस चल रही है, बस इधर उधर हिल रही, आप भी उधर उधर हिल रहे हो. क्या होता है कि यू आर सिटिंग ऑन द seat of bus, but at the center point, okay, you are your posture is correct, straight weight, but due to continuous motion and bad roads, what happens, you are continuously going out from the center. आपको जो center of balance है वो disturb हो रहा है, फिर बार आपका head हिल रहा है, इधर उधर हिल रहे हो, right? So there is disturbance in the center and your body will try to maintain the posture, your body will try to maintain the balance. You are continuously disbalance हो रहे हो, है ना, because of the turns, because of the गड्ढा जो होता है उसकी वजह से टर्न्स होते हैं, स्पीड जो है बस का ब्रेक लगाना है, तो कंटिन्यूसली आपका हेड क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है इसका. So your body will try to maintain a center balance. Now what happens due to continuous stimulation, continuous change in the change in the continuous disbalancing. So what happens, balancing center continuously tries to your body to balance yourself. Because of this balancing center gets stimulated. Balancing center present in the medulla oblongata of brain. वो stimulate होता है. Now nearby the balancing center your vomiting center is there. तो आपके balancing center के आसपास ही vomiting center है. Now as there is stimulation of balancing center due to continuous shaking of your head, due to continuous changing the position of your head due to traveling. So what happens? So
stimulation of your balancing center, also stimulation of your vomiting center, because vomiting center is near to the balancing center. And what happens? That's why feeling you are feeling nausea, you are feeling vomiting. बऱ्याच जणांना काय होतं, ट्रॅव्हलिंग मध्ये बस लागते म्हणजे काय, त्यांना उलट्या होतात बस. That is because of this, due to continuous shaking of your head. Your body will try to maintain your posture correct, and your body will try to maintain balance by stimulating the balancing center. Near to the balancing center, you have vomiting center. That is known as a motion sickness. मोशन सिकनेस म्हणजे काय, आप ट्रॅव्हलिंग कर रहे हो, आप उसमें आपको वोमिटिंग होना. क्लियर, माहिती तर काय तर ट्रॅव्हलिंग नसतं. येस, झालं का क्लियर? आर यू गेटिंग और नॉट? Also used in the schistosomiasis, and it has an effective control on parasitic infection. US FDA has included ginger as a product that is generally regarded as a safe, GRS. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. US FDA included ginger in the generally regarded as a safe drug. याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. काही करता येते ना आपल्याला. A pungency of this ginger is destroyed by boiling with a 2% solution of sodium hydroxide. Important है, क्वेश्चन आ चुका है इसका. Pungency means what? जो तिखटपना है, तीखापन है उसका जिंजर का. So pungency of ginger can be destroyed or can be removed just by boiling that ginger with the 2% solution of sodium hydroxide. 2% solution of sodium hydroxide, you have to boil ginger in that. So ginger will be okay. So it will be without pungency. So pungency of ginger is lost by, it can be destroyed by boiling the solution, boiling the ginger with the 2% solution of sodium hydroxide. You have to remove. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Adulterants. It is adulterated with the exhausted ginger. Exhausted ginger मतलब क्या है? The ginger from which retail oil has been removed by. So exhausted ginger means retail oil उसमें का retail oil remove किया है. So adulterated with the exhausted ginger and can be easily identified by water test. Just you have to put in the water. So, it can be identified by water soluble ash. The oil content as well as acid soluble ash. So exhausted ginger and authentic ginger can be identified by identified by water soluble ash, oil content as well as soluble ash. Oil content तो इसमें होगा ही नहीं ना, because exhausted ginger oleoresin. इसमें क्या है? Oleoresin. Ginger oleoresin, oil plus resin. So gingerin contains of 30% ginger oil. Main pungent principle responsible for the pungency of ginger. Then shogol होता है, उसमें gingerone होता है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं 2 बार. Important है ginger. You can see this is known as a ginger plant. ये ऐसा ही होगी. These are your gingers. These are the gingers. Which is the crop. This is the crop of ginger. Microscopy of ginger, you can see. शेप साइज इसका होता है, यू कैन इजीली शेप साइज का कोई इतना मैटर नहीं होता है. सो अराउंड 2 to 15 सेंटीमीटर का लॉन्ग एक उसका राइजोम होता है. शेप क्या है? लेटरली फ्लैटन होता है, हॉरिजॉन्टल राइजोम. फ्रैक्चर शॉर्ट एंड फाइब्रस फ्रैक्चर. इफ यू ट्राई टू ब्रेक दिस राइजोम तो आपको क्या मिलेगा? टूट जाएगा वो, लेकिन उसमें कुछ फाइबर्स निकलेंगे. तो शॉर्ट एंड फाइब्रस फ्रैक्चर इज. अगर दोनों में एकदम, जैसे अपने या फिर अपने कोई पेंसिल है या फिर कोई चौक है तोड़ दिया बीच में से, वो क्या है? वो दैट इज अ रफ फ्रैक्चर, थोड़ा सा खुरदुरा रहेगा. आपने चॉकलेट का एक बड़ा ये वो तोड़ दिया, बीच में से टूट गया कैडबरी, दैट इज अ स्मूथ फ्रैक्चर. टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर ये सब चीजें. ऊपर में क्या मिलेगा आपको? कॉर्क सेल. देन उसके बाद में कॉर्टेक्स. उसके बाद में फाइब्रोवास्कुलर बंडल. इट इज अ वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल से इधर मिलेगा starch grains and oil glands, xylem and phloem vessels. इसमें रहेगा gingerol, that is alcohol. Shogol का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नॉट इम्पोर्टेंट. जिंजीबेरिन स्ट्रक्चर नहीं याद रखा तो. नेक्स्ट वन इज अ कैप्सिकम. कैप्सिकम मतलब मिर्च, इज नोन एज चिली. आपका जो चिली होता है उसको बोलेंगे अपन कैप्सिकम. कैप्सिकम, ओके. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैप्सिकम? इट इज नोन एज चिलीज, है ना, मिर्च. सायनी पेपर. बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? ड्राइड
राइप फ्रूट्स, राइप मतलब पके हुए। लाल मिर्च क्या है? राइप फ्रूट ऑफ कैप्सिकम, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कैप्सिकम एनियो, फैमिली क्या है? सोलेंसी। It should contain not less than 12% of non-volatile ether soluble extract और it is cultivated in the all tropical countries जहाँ पे बारिश वगैरह होता है उसमें सब उस कंट्री में, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, इंडिया। इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन द आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, तमिलनाडु, सभी जगह पे कल्टिवेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे भी कल्टिवेशन एंड कलेक्शन, कल्टिवेशन इज डन बाय सोइंग द सीड्स ऑन रेज्ड बेड्स। देखो मिरचीची लागवड कशी करतात? मिरच्या है ना, मिर्ची कैसे लगाने का है आपको, उसका सीड्स जो है वो पहले जो बेड प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब बेड मतलब जमीन का वाफा वगैरह, उसमें सीड्स डालना है आपको और वो सीडलिंग्स तैयार होंगे। उसके बाद में वो सीडलिंग्स यू हैव टू, वो सीडलिंग 1 महीने के बाद में आपको फील्ड में लगाना पड़ता है। सो कल्टीवेशन इज डन बाय सोइंग द सीड्स ऑन अ रेज्ड बेड, सीडलिंग्स of 1 month they are transplanted into a prepared field as an irrigated crop। इसको पानी लगता है, it is an irrigated crop। so normally this plant is rotated with the sugar cane and turmeric, है ना। एक बार गन्ना का खेती हो गया उसके बाद में इसको फील्ड को क्लियर करेंगे और कैप्सिकम लगाएंगे, या फिर टर्मरिक का क्रॉप आ गया उसको निकाल के फिर टर्मरिक के बाद कैप्सिकम करेंगे। It is a rotation crop with the sugarcane and turmeric. Crop is ready for harvesting after 6 months. Yeah. Now, fully ripened fruits are picked by hands. They are collected. Next, क्या है? Chemical constituent. Again important. 0.5 to 0.9% colorless crystalline pungent principle. कौन सा है? Capsaicin. Capsaicin. Capsaicin is the colorless pungent principle. Picket. It is nothing but the dicyclinic vanillin amide. Dicyclinic vanillin amide, capsaicin. So pigment present in the capsaicin और pigment present in the capsicum. Pigment कौन सा है? इसमें pigment the capsanthin. Question इसके ऊपर आ चुका है। Capsanthin is a pigment present in the capsicum. इसमें carotene भी होता है। Carotene responsible for the red color of this. इसमें in addition to that thymine is there, tocopherols are there, ascorbic acids. They are the other content of the drug. Now uses क्या है इसके? The carminative, appetizer, stomachic, increase करता है भूख, acid को release करेगा stomach में, है ना, stomachic, carminative. Externally it is used as a counter irritant. Externally क्या है? Counter irritant. Then used in the rheumatism and lumbar pain as well as neuralgia. Neuralgia means nerve pain. उनका यूज है। Then pungency is destroyed by oxidizing agent like KMNO। आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि pungency of following crude drug can be destroyed by KMNO। तो आपको ऑप्शन में एक देते जिंजर, एक देते कैप्सिकम और उसमें टर्मरिक भी देते हैं, तो आपको कंफ्यूज होता है बार। याद रखना है pungency of ginger is destroyed by 2% solution of sodium hydroxide। Pungency of capsicum is destroyed by oxidizing agent KMNO and not by sodium hydroxide। Pungency of capsicum is destroyed by oxidizing agent KMNO for potassium permanganate, not by sodium hydroxide। Is that clear? Are you getting or not? Okay. Then next is nothing but turmeric। तो टर्मरिक तो आपको पता ही होगा, आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो, है ना। टर्मरिक तो पता ही होगा आपको। सो टर्मरिक, व्हाट इज द सिनोनिम? Write down the synonym Indian saffron. In that, again, it is also known as a kurkuma. It is also known as a haldi in Hindi, halad in Marathi, and haridra. Haridra in the maybe biological and geographical source, dried as well as fresh rhizomes of the plant known as a curcuma longa family gingibraceae. Should not contain not less than 4% of pollutants. 90% of turmeric supplied by India to the world। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड, वर्ल्ड का पूरा फुलफिलमेंट कौन करता है? इंडिया। 90% टर्मरिक requirement of the world is fulfilled by India only। In the India it is produced in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and these two contribute the 70% out of 90%। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ही ज़्यादा
टर्मरिक उगता है, इसका 70%, 90% का जो वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट है उसमें का 70% तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से आता है. Kerala also produces the large quantity of turmeric. It is very superior in quality, Kerala one, and exported on a large scale. Cultivation and collection, plants are grown up to plants are grown for the 7 to 9 months. So after 7 to 9 months, the rhizomes, both mother and finger rhizomes, मतलब मेन rhizome जो होता है वो उसको बोलेंगे अपन मदर rhizome. उसके बाद में उसका जो छोटा वाला rhizome है उसको बोलेंगे अपन finger rhizome. So after 7 to 9 months of uh, after 7 to 9 months of the life of plant, you have to harvest the rhizomes. Both mother and finger rhizomes they are harvested. Now first they are cooked and dried, then processed. इसको पकाना पड़ता है पहले, है ना. उसके बाद में मतलब वाटर में बॉईल करना पड़ता है पकाना. Then they are dried and then processed for powder for oleoresin and curcumin, which is the main component of your turmeric. Curcumin is the main component. It has anti-inflammatory activity. It has a lot of activities. Both are research activity, antiseptic भी होता है. High yielding variety has been developed by using tissue culture technique. Clonal propagation also successfully developed in case of curcuma longa. Microscopic character क्या है इसका? Brick shaped parenchymatous cork. Brick मतलब क्या है? Square type का जैसे rectangular type का parenchymatous cork cell होता है. Followed by cork cambium, scattered vascular bundle. In the cortex, starch grains are absent. So not much more. Chemical constants are important. Okay? In the turmeric, 5% volatile oil is there. Resin, then gingiberous starch grains are there. Yellow coloring substance होता है इसमें क्या है? नाम पे curcuminoids. क्वेश्चन आ चुका है. Yellow colored substance from the turmeric. तो आपको याद होना चाहिए. Curcuminoids. Curcumin नहीं, curcuminoids. The chief constituent of curcuminoids is curcumin. Curcuminoids में 50 to 60% क्या होगा? curcumin होगा. इसका भी टाइप होता है अल्फा curcumin, बीटा curcumin, 2-3 टाइप होते हैं. So you can easily distinguish by you can distinguish by these three by chromatography. You see, है ना, अपने TLC अगर किया है इसका curcumin या फिर isolation of curcumin किया from ginger, and if you do the TLC, you will easily find out the 3 different spots. So they are nothing but the alpha, beta, and gamma curcumin. Isomers of each other. In addition to that, pinene is there, parentin is there, DL, termerone are there, curcumin, dimethoxycurcumin, and bis-dimethoxycurcumin. Chemical content varies with the geographical source. Now, uses of turmeric is the use क्या है? It's used as a condiment, spice, and coloring agent. Daily आप खाते हो इसको, सब्जी में इसको डालते हो. It is used as a condiment, spices, and coloring agent. Especially used for the creams and ointments as a coloring agent. Creams or ointment में coloring agent बोल के use करते हैं. It has an anti-inflammatory activity. It has anti-arthritic activity, and also it's the antiseptic. बचपन से ही आपको है ना कुछ लगा हल्दी का दूध पियो. Curcuma benzoin. Curcuma benzoin is obtained from the China. Curcuma benzoin is the Chinese turmeric. Curcuma benzoin is obtained from the China and has been used in the cervical cancer. Cervical cancer में China वाला ही माल यूज करते हैं, हमारा नहीं. Okay, now you know that we are using from thousands of years this curcumin for different types of elements like infection, for as anti-inflammatory properties. But in the US ने क्या किया इसके ऊपर रिसर्च किया. इसके ऊपर रिसर्च किया, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है वो फाइंड आउट किया, कौन सा curcumin, और उसके ऊपर पेटेंट कर दिया. मतलब प्रोडक्ट हमारा है ना, नाम उसका ऐसा चल रहा है. केमिकल टेस्ट. So in this powder drug plus sulfuric acid you get a crimson color.
सेम कलर मिलेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड। Solution of turmeric will give reddish brown color with the boric acid upon addition of alkali. Upon addition of alkali, color changes to greenish. तो बोरिक एसिड के साथ में क्या करेगा ये रेडिश ब्राउन कलर देगा। ओके, टर्मरिक विल गिव यू रेडिश ब्राउन कलर विद द बोरिक एसिड, बट अपॉन एडिशन ऑफ अल्कली, इसके बाद में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, इट विल चेंज टू ग्रीनिश ब्लू। टर्मरिक विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड H2SO4 concentrated H2SO4 will give you violet color, and when this test is observed under UV light, you will get a red rose. एनाइड्राइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ में अगर टर्मरिक को ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वायलेट कलर। तो वही अगर आपने यूवी लाइट के अंदर देख लिया, इसको आपको रेड फ्लोरोसेंस मिलेगा। अडल्ट्रेंट्स फॉर कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा इज योर ऑथेंटिक ड्रग। अडल्ट्रेंट क्या है, कुरकुमा अमाडा। कुरकुमा अमाडा is a common substitute and it is found in the Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal. Curcuma amara. So this is a curcumin crop. This is the ginger. ये बाकी roots है. So this is the rhizome. This is the rhizome. These are the roots. So after drying this, you will get this your turmeric. Next is the asafoetida. तो asafoetida को अपन बोलते हैं, so asafoetida is known as a hing. हिंदी में इसको हींग बोलते हैं, अपन खाते हैं ना, शाही हींग। सोनाली बेंद्रे आती है चयनित करने की, शाही हींग। इसमें हींग लगाओ, हींग का तड़का। तो हींग का तड़का मतलब क्या है, उन्होंने घर से थोड़ी बनाया हींग, वो आता है एस्पोइटा, वो प्लांट से आता है, लेकिन ब्रांड रहते ना, अपना अपना नाम ठप्पा लगा के बेचते हैं, एस्पोइटेड। इट इज नोन एज अ डेविल्स डंग। क्या बोलते हैं इसको, डेविल्स डंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। डेविल्स डंग इज नोन एज एस्पोइटेड, exudate, or it is also known as a hing in the Marathi Hindi. Food of God, food of God. What is that? It is a oleogum resin. क्या है, oleo plus gum plus resin obtained by making the incision. कट देना है आपको, कट किसको देना है, कट rhizomes and roots of the plant known as a ferula foetida. Ferula foetida नाम का जो प्लांट है, ferula foetida, उसके rhizomes को, उसके roots को कट देके जो oleo resin निकलेगा इसको बोलेंगे। So it is a oleoresin obtained from making incision to the rhizomes and root of Ferula foetida, Ferula rubricularis, Ferula nathex. Okay, from the Kashmir. फैमिली क्या है इसका, अमेरिका, ये कश्मीर में ही पाया जाता है। Found in the Central Asia, Iran, Afghanistan, found in the Kashmir, in the area. In Afghanistan region, it is obtained from the carrot-shaped massive roots and rhizomes of the plant, which are about the 4 to 5 years. 4-5 साल का जो प्लांट है उससे आता है अफगानिस्तान। इट इज इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, just for the flowering season. The upper part of roots are very close to the ground, cut off. Now after that milky juice ooze out, वहाँ से milky juice बाहर निकलेगा at the cut surface and start coagulating. वो coagulation हो जाएगा, क्या बनेगा, गाढ़ा बन जाएगा। Cut surface is covered with the dome-shaped device made of leaves का जो dome shaped का device बनेगा, तब जो उससे कट करना है to avoid the contamination, उसको कवर करना है पेड़ को to avoid the contamination. More cuts are given to collect more exudate. Latex is dried, packed in a suitable container and marketed as a asphalt to dry. इसको मराठी में अपन नहीं बोलते, कभी कभी लोग, कुछ लोग कायम भी बोलते हैं। Now chemical constants again important. It consists of a resin. कौन सा resin है इसमें, 40 to 60% resin, then 20 to 25% gum is there, and 4 to 5% volatile oil. Now chiefly it is known as a asa-resinotenol. Asa-resinotenol. Either it is a free or it is in a combination with the ferulic acid. आपको पूछेगा ferulic acid is the active constant of Ferula foetida, known as asafoetida. So asa-resinotenol is either free or in a combination with the ferulic acid. Now free umbelliferone is not present in this plant, it is absent in the drug. Now it is a distinction from galbanum. एक galbanum नाम का ड्रग होता है, उसमें फ्री umbelliferone होता है, इसमें नहीं होता है, इसका एक टेस्ट भी है। तो मेन कंपोनेंट इज नथिंग बट द asa-resinotenol, either combination with the ferulic acid or may not.
Now, oil is obtained from steam distillation of oleocum resin, which consists of a secondary butyl propanoyl disulfide. And odor of drug is because of this only. Odor of drug is because of the sulfur compound. कौन सा है? Butyl propanoyl disulfide. So odor of this alcohol drug. इसका हिंग का जो अगर आपने order लिया तो अच्छा नहीं लगता. Odor नहीं अच्छा. Use करते हैं. What is used? It is a carbonative nervine stimulant. Nervine stimulant. That's why it is known as the food of God. Also known as the devil's tongue. क्यों बोलते हैं? Devil's tongue क्यों बोलेंगे इसको? Because it is a nervine stimulant. Nerve को stimulate करता है. It is an anti-flatulent. क्या है anti-flatulent? मतलब आपकी gases remove करके पेट में से. Flavoring agent. Also used in the veterinary medicine. Adulterant क्या है इसका? Adulterated with the gum arabica, rosin, gypsum, red clay, chalk. देखो इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया. ऐसा क्वेश्चन red clay, chalk or barley or wheat flour. As it is red clay, chalk and barley or wheat flour. It is used as an adulterant for following. अभी देखो समझ मतलब नहीं भी समझा ना तो इतना इजी है कुकनेस का आंसर करना. भी व्हीट फ्लोर कैसे आता है? बाजरी ज्वारी का मतलब गेहूं का फ्लोर व्हीट. बाजरे का पीठ कैसे होता है? हिंग भी वैसे होता है. दैट्स व्हाई this wheat flour, barley or chalk powder or red clay is used as a substitute or adulterant for the your asafoetida. Okay. Now chemical test is nothing but the fractured surface of drug. You have to add H2SO4. Red or brownish color is there. With the nitric acid, it will give you green color. Now triturate 0.5 gram of drug with the sand. Add 5 ml of HCl and small quantity of water. Filter it and with the filtrate equal volume of ammonia. You will get a blue fluorescence which is produced due to amblyopyrin. Triturate करना है आपको 0.5 ड्रग इन द आपका जो मोटर पेस्ट है उसमें विद द 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसमें थोड़ा वाटर ऐड करना है. ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर. फिल्टर करो उसको एंड जो फिल्ट्रेट है so equal amount of ammonia you have to add in the filtrate. You will get a blue fluorescence. That is because of the amblyopyrin. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. ये पर्टिकुलरली आपका जो फार्मेसी एग्जाम होता है इसके लिए एक बार जीपैट में भी आ चुका है. Ferric acid is present in the asafoetida. Important. So these are the plant कुछ ऐसा होता है उसका. इसके रूट्स एंड राइजम जो होते हैं उसको कट करके जो एक्सुडेट मिलता है जो सिक्रेशन होता है सो ये ऐसा होता है. ट्राई करने के अंदर पाउडर फॉर्म में अगर करें तो उसको so it is known as a umbellic acid. Umbelliferone. The umbelliferone is not there. Poetidine and this one is known as the ferric acid and asafoetidine. Next is the podophyllum. 5 मिनट में इसको खत्म कर लेंगे. Podophyllum because I have to take session for another batch. Podophyllum कल भी आपका लेक्चर रहेगा. Podophyllum. So synonym. It is known as the Himalayan May apple. क्वेश्चन आ चुका है. Himalayan May apple. हिमालय का May apple. Himalayan May apple. Also known as the Indian Podophyllum. Podophyllum, Indian Podophyllum, Himalayan May apple. So dried roots and rhizome क्या है किसका? Podophyllum hexadrum. Podophyllum hexadrum. Family Berberidaceae. Berberidaceae or Berberidaceae. Podophyllum Imodi. Podophyllum peltatum. Podophyllum Imodi. Podophyllum peltatum. Podophyllum hexadrum. Out of that, Podophyllum peltatum is known as the American Podophyllum. It is found in the forest of Himalaya. हिमालय के forest में आता है इसलिए Himalayan May apple. It is found in the Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. Now this drug is again important drug है. Cultivation collection not much important. Roots and rhizomes are obtained from wild growing plant. ये इसका cultivation नहीं करते, जंगल में जो मिलता है वही लिखा है. So roots and rhizomes they are often found digging the roots and rhizomes of old or from the wild grown plant. Dug up the rhizomes in the spring or in the autumn. They are washed clean, dried in the sun. Roots contain more resin than rhizome. Microscopic character इसका rhizome जो है outermost layer is a cortex thin walled polygonal tubular cortex. Cortex is made of celluloid parenchyma containing starch grains.
क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट होते हैं इसमें। रूट में क्या है, absence ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट्स। रूट में कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल नहीं होता है, सप्लाई जोन में होता है। माइक्रोस्कोपी not much important. Chemical constants obviously they are important. Indian podophyllum consists of about 7 to 15% resin known as a podophyllum. कौन सा resin है भाई, podophyllum. Active principle of this resin is nothing but the podophyllum. इसमें क्या resin है, podophyllum. Active resin का compound क्या है, podophyllum, and it is an anti-cancer. In quercetin, camphorol, essential oil, flavonoid, astragalin, ये भी है. Podophyllum is the resin. An active component of podophyllum resin is a podophyllum. This is the anti-cancer. Quercetin, camphorol, essential oil, flavonoid, astragalin. These are the also present. Chemically, it consists of a lignan. इसी क्या है, lignan है. That is compound whose chemical structure is based on the 2,3-dibenzyl butane. Lignan जो होते हैं, they are the derivative of 2,3-dibenzyl butane. Lignan मतलब क्या, lignan टर्म आया तो ये सबका डेरिवेटिव इसका 2,3-dibenzyl butane का. Etoposide 4-dimethyl epipodopyroxine ethylene glucoside, इसको बोलते हैं etoposide. So it is a semi-synthetic product, semi-synthetically reproduced, or it is semi-synthetically produced from this podophyllum and used in the testicular and lung cancer. American podophyllum consists of alpha and beta palantenes, not present in the Indian podophyllum. Use क्या है इसका, it is used in the treatment of venereal diseases and other warts. मतलब जो आपको STD होता है, sexually transmitted disease, that is known as a venereal disease, and warts, उसमें अगर कोई warts वगैरह होते हैं. Also it is purgative, it is a colloid of bitter and tonic. Production of synthetic derivative known as etoposide, which is used in the testicular and lung cancer. Chemical test होता है इसका 5.5 ग्राम of drug plus 10 ml alcohol, filter करो उसको, add strong copper acetate solution and 0.5 ml of copper acetate solution add करना है. You get a brown precipitate. Okay, so remaining part we'll see tomorrow. Are you getting or not? समझ रहा है आपको?